हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर। सो सबसे पहले हम यूनिट 1 और 2 में क्या पढ़ने वाले, इंट्रोडक्शन एंड इंस्ट्रक्शंस टू माइक्रो प्रोसेसर 8085 पढ़ेंगे हम। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से सबसे पहले होता क्या था, जैसे हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के साथ कि माइक्रो प्रोसेसर और कंट्रोलर्स आया कहाँ से। अगर आपको ये जानना है तो आप समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करती थी पहले मेरे पास लार्ज लार्ज कंप्यूटर्स में इस्तेमाल। सो लार्ज साइज कंपोनेंट्स था जिसकी वजह से स्पेस ज़्यादा लेते थे, स्टोरिंग भी ज़्यादा होती थी, इनफैक्ट स्विचिंग प्रॉब्लम भी काफ़ी रही करती थी, और वैक्यूम क्रिएट करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मेजर टास्क था। तो इसलिए हमने क्या करा, इन सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हमने थोड़ा मॉडर्नाइजेशन करी। क्योंकि जो वैक्यूम वगैरह थी इनमें लार्ज हीट डिसिपेशन भी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी वगैरह क्रिएट कर देती थी उस रीजन में जहाँ इसको ऑपरेट करना था बेसिकली। तो अब ये तो है नहीं कि कोई फर्नेस में बैठ के कंप्यूटर चलाएगा, समझो इस तरह का लेवल नहीं होना चाहिए ना। सो वी मूव्ड ऑन बेसिकली टू ट्रांसिस्टर्स को, और ट्रांसिस्टर्स ने 1947 में इन इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस कर दिया, जिसमें साइज एक्सट्रीमली 1x हो गया, आउट ऑफ लाइक बेसिकली 1% हो गया फ्रॉम द 100% साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब्स। एंड बेसिकली विद ऑल द फंक्शनिंग जैसे कि मेरे पास वैक्यूम ट्यूब में सी भी थी। बट उसके बाद भी हम मेरे को लगा कि हमारे पास जो ट्रांसिस्टर्स है वो भी बहुत बड़े साइज़ के, में ऐसा लगा। एंड उनको मैनेज वगैरह करना भी अलग अलग जगहों पे रख के, में से एक चिप पे नहीं होते थे क्योंकि सारे एक उस पे नहीं होते थे, बोर्ड पे हम ऐसे कह सकते हैं। तो इसलिए हमने उनको स्मॉल आईसीज दैट इज इंटीग्रेटेड सर्किट्स में और उसको मॉडर्नाइज कर दिया। सो जो कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स में क्या होता था, फिर मेरे पास फर्स्ट स्मॉलेस्ट आईसी जो थी मेरे पास, स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स एसएसआईज। सो फर्स्ट स्मॉलेस्ट क्या थी आईसी मेरे पास, हैविंग लेस देन 10 कंपोनेंट्स। उसके बाद मीडियम स्केल आईसीज बनी जिसमें 10 to 100 के बीच में कंपोनेंट्स रहे, एंड उसके बाद तो लार्ज स्केल आईसीज आई जिसमें 100 से ज़्यादा कंपोनेंट्स आए। और आज के टाइम पर तो वेरी लार्ज स्केल आई मेरे पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स भी है, वीएलएसआई जिस टॉपिक को कहते हैं, दैट इज़ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसमें 1000 से ज़्यादा कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर जस्ट एन आईसी दैट वर्क्स ऑन वीएलएसआई बेसिकली। सो माइक्रो प्रोसेसर है क्या, माइक्रो प्रोसेसर इज जस्ट एन आईसी दैट इज एन, इट इज एन इंटीग्रेटेड सर्किट दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ वीएलएसआई। ओके। सो कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, अगर हम बात करें ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने आपको एक एक इंट्रोडक्शन अभी क्या कहते दिया है। आप इसमें एचटीएमएल आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको इजी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें कंटेक्स्ट और बेसिकली एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के ऊपर, बिकॉज कंप्यूटर समझना ही बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। सो कंप्यूटर के बेसिकली हमेशा 3 बेसिक पार्ट्स होते थे, दैट इज इनपुट डिवाइसेज और आउटपुट डिवाइसेज होता है, और बीच में मेरे पास क्या होता है, सीपीयू होता है, जिसमें मेरे पास अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंप्यूटर यूनिट, बेसिकली रजिस्टर्स वगैरह होते हैं मेरे पास, कंट्रोल यूनिट एंड वो सब होते हैं। एंड बेसिकली सीपीयू के साथ अटैच्ड होती है मेमोरी, एंड फिर फाइनली आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, प्रिंटर, डिस्प्ले वगैरह जाता है। सो माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली एक सीपीयू ही है जो कि बेसिकली एक सिंगल चिप पे है। ये एक सेमीकंडक्टर कंपोनेंट है जो वीएलएसआई टेक्नोलॉजी यूज करके बनाया जाता है, और इसमें एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर्स होते हैं एक ही सिंगल पैकेज में। बाकी मेमोरी इससे भी एक्सटर्नली अटैच होती है। सो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रजिस्टर्स बेसिकली प्रोसेसर के अंदर होते थे, जो डाटा के टेम्परे बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जो रजिस्टर्स हैं, रजिस्टर्स प्रोसेसर के अंदर होते हैं बेसिकली, यहाँ पर जो डाटा को क्या करते हैं बेसिकली टेम्परेली स्टोर करते हैं फॉर द प्रोसेसिंग, बट ये मेमोरी नहीं कहलाते। मेमोरी बेसिकली अलग से एक्सटर्नली कनेक्ट होती है। सो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें रजिस्टर्स हैं, बट दे आर बेसिकली टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइसेस, दीज आर नॉट मेमोरी बेसिकली। एंड बेसिकली मेमोरी इज एक्सटर्नली कनेक्टेड, बिकॉज मेमोरी वो है जिसमें से डाटा जाना नहीं चाहिए, हमारे पास हमें स्टार्टिंग से एंड तक का डाटा होना चाहिए। बट रजिस्टर्स क्या है, उसमें इंस्टेंटेनियस डाटा है। सो वी कांट से बेसिकली इट इज़ अ मेमोरी, इट इज़ जस्ट एन इंस्टेंटेनियस स्टोरेज हाउस, बट मेरे पास मेमोरी कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक वेयर हाउस है और मेरे पास एक क्या कहते हैं वेयर हाउस है और मेरे पास एक छोटा सा स्टोर रूम है। सो अगर मुझे मान लो लेट सपोज कि कल को सामान जाना है, और मैं जो पर्सन जो सामान लेने आता है उसको मैं सारे सामान को एक्सपोज नहीं करना चाहता जो मेरे वेयर हाउस में रखे हैं। सो व्हाट आई कैन डू कि रात में वो प्रीवियस टू द डे ही इज कमिंग अप, मैं उस सारे सामान को स्टोर रूम में शिफ्ट कर दूंगा, छोटे वाले जो उसको ले जाना है उसी को, सिर्फ सारे को नहीं, मतलब इन द सेंस जो वेयर हाउस में है जो उसको ले जाना है सिर्फ उसी सामान को। सो दैट इज बेसिकली एक रजिस्टर, बट वी कांट से बेसिकली मेरा वेयर हाउस जो है वो स्टोर रूम है। नो, वेयर हाउस है, स्टोर रूम है, समझो बात को। काम भले ही स्टोर रूम का थोड़ी देर के लिए स्टोरिंग का ही हो सकता है, बट वेयर हाउस का परमानेंट काम है चीज़ों को स्टोर करना बेसिकली। और उसमें मेरे पास ये आइडिया भी रहेगा कि कौन सा सामान स्टोर हाउस में गया था फ्रॉम द वेयर हाउस। ओके।
तो ये चीज़ें हमें समझनी है। सो कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी 0 और 1 समझता है, ये आपको समझना है। एक बिट बेसिकली होता है एक बाइनरी डिजिट 0 या 1 बेसिकली। और अगर निबल की बात करते हैं तो इट इज़ बेसिकली 4 बिट्स, एंड अगर हम बाइट की बात करते हैं तो इट इज़ बेसिकली 8 बिट्स। सो माइक्रो प्रोसेसर इज बेसिकली अ सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप। माइक्रो प्रोसेसर के बेसिकली बाहर होती है बेसिकली मेमोरी, एंड वो अंदर नहीं होती उसकी मेमोरी। ये बातें आपको थोड़ी सी अगर समझ आ गई तो काफ़ी ज़्यादा आपका फ़ायदा होने वाला है। अब हम आ जाते हैं, सो व्हाट इज अ माइक्रो प्रोसेसर। ये आपको एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, व्हाट इज अ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर इज जस्ट ओनली सीपीयू। माइक्रो प्रोसेसर is just only mapped with the CPU, and it is basically a CPU on a chip. What is microprocessor? It is a CPU on a chip basically. So CPU is, so it contains itself ALU, CU and registers in itself, but it is just a CPU on a chip. So ये simple question आएगा, what is microprocessor? It is just an CPU on a chip। अगर आप ये लिख देंगे 100% आपको मार्क्स मिल जाएंगे, एंड इनफैक्ट आपकी नॉलेज टेस्टिंग भी बढ़िया हो जाएगी। सो माइक्रो प्रोसेसर डज नॉट हैव इट्स ओन मेमोरी, मेमोरी इज ऑलवेज एक्सटर्नली कनेक्टेड। सो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट बेसिकली डेफिनेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। व्हाट इज अ माइक्रो प्रोसेसर? सो बेसिकली अगर हम डेफिनेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर लिखवाना चाहें, सो इट इज अ सेमी कंडक्टर कॉम्पोनेंट फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली डिजाइंड बाय यूजिंग VLSI basically design technologies, and it is contains ALU CU registers of a CPU in a single package basically. Okay, so it is a basically semiconductor component designed using VLSI, and it contains ALU CU registers of CPU on a single package. Okay, so microprocessor are actually store just basically CPU on a chip. So for a processor, memory is connected basically externally, and registers क्या होते हैं? They are basically temporary storage registers inside the processor and are used to hold the data temporarily. Therefore it does not constitute as a part of the memory, and computer understands bits, nibble and byte. I have told you. So what is word length? Let us now basically first of all understand what is word length. Word length basically depends upon the type of processor, and it is commonly, if we try to explain it, it is just basically the number of bits that could be processed parallelly by a basically processor at a time. That is basically word length, that it is the number of bits that could be processed parallelly by a processor at a time. Okay, though we can say that, let's suppose there is a processor which could parallel 8 bits at a time, so that is the word length of that processor is 8. I have just give the example. However, 8085 is which kind of 16-bit processor or 8-bit processor, whatever. It is a 16-bit processor, but that we will be discussing it later on. Okay, so number of bits that could be processed parallelly at a time is basically what's known as the number of bits that could be processed parallelly at a time is what's known as the basically word length. Let us now move on towards the history of microprocessor. Basically, if we study more about the history of microprocessor, these like whatever I'm telling you is not mentioned being here. So also listen to me properly. Also, like some aspects might be mentioned, like word length is mentioned. Okay, some aspects might be mentioned, so don't get basically confused up or with those aspects. What I'm telling you is basically in sequence series. So first of all, listen to me properly, then only you will be able to understand the HTML PDF that I will be providing you in the description, and basically able to understand the concepts. So first of all, basically understand the things that I'm trying to tell you. So in 1971, basically Intel 4004 was introduced, and it was a 4-bit processor. So it means that parallelly at a time it could process only 4 bits. But after that, basically in 1972, Intel upgraded it 4004 processor to double in terms of basically labeling, that is 8008, sorry, and basically it is a 8-bit processor, so processing was also doubled. But just soon after, basically like basically this is what is happening in continuation. Like in 1971 4004 came, then in 1972 8008 came, then in 1974 basically 8080 came, where was also a 8-bit processor but with some advanced technologies as compared to 8008. And in 1977 basically Intel introduced its 8085, that is a processor that will be studied deeply here basically, and it is most important in terms of every exam, that is 85 processor, and it is a 8-bit processor only. And sorry, I earlier mentioned you wrong that it was a 16-bit, it is 8-bit processor. And in 1978 basically, because I was like feeling that I was mentioning of 8085, but I told you about 8086, sorry, because it is basically 8086 is basically Intel's good processor, that is 16, but it is not asked much in exam. We will study the 8-bit basically 8085 processor only. So Intel have introduced its 8088, 186 and 80386,
that are 32-bit processors, and also Pentium, that dual core, that is 13, 15, 17 series and all that. These are 64-bit processors. So we don't care about basically the number of bits, we care about how the bits are being processed. If we understand about that, then you can basically process 32 bits as well as 64 bits. But the way of processing the bits, that is, we have to polish that way of processing the bits. So best we will be studying about 8085 processor, because it is processing 8 bits, and 32, 16 or 64 are basically multiples of 8. So if we able to understand how 8-bit processor works, we can simply move on to basically these processors. But to understand how 8-bit processor works, the bits will be basically processed in 4 sets. But however, we will be studying from starting not 4 but 8-bit processor. Okay, so let us now move on towards microcontroller. Basically, microcontroller is everything designed on a single chip. Yes, basically here the timers and counter circuits, ALU, CU registers, memory, as well as basically the interfacing circuits, they all designed on a single chip. Yes, that's the difference between microprocessor and microcontroller. That's an important question that comes in your exams. Like in every exam, that it could come. So microprocessor basically what it contains, basically it contains basically first let us discuss about microcontroller, that it will be easy to define the microprocessor. Microcontroller contains timers and counters, memory, LUC registers and interfacing circuits on a single chip. So there is no internal memory that is needed, and no interfacing and basically circuits and controllers, timers, counters that are needed externally. However, these opposite points are not valid for opposite points are valid for microprocessor. In microprocessor, it contains LUCU registers but no interfacing circuits, timers, counters, or memory on a single chip. So, but a microcontroller is used for specific applications, and microprocessors are used for general purpose applications. For example, let's suppose you want to fly a drone. So you won't be using microprocessor. In such case, you will be using microcontrollers. In such case, some beta flight microcontrollers and all that. That will be best case for you. Okay, so you have to understand these aspects also. Now we will be moving towards some other aspects of basically this topic, microprocessor and controls, in the next video. This was a description video where I was giving a brief introduction about the what we will be going to study in the syllabus. So don't basically worry about that if you are not able to understand. That's why I'm making the videos of basically short length, like a maximum up to 15 minutes, so that if you don't get in one go, you can go one more time across the video and understand the topics. Hope so you like the content. Don't forget to like and subscribe my video.